Start. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Superhub. I would like to welcome you all to our new ECHO session and series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please try to join the session through the IECHO email link to mark your attendance. We also like to thank Ferozens Laboratories Private Limited for their unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patients otherwise referred out. Patients with chronic conditions get high quality care without travel and waiting. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of participation, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Dr. Adnan Salim, is currently serving as Associate Professor in the Department of Gastroenterology Hepatology at Sheikh Zayed Federal Postgraduate Medical Institute. He also contributes significantly as a consultant on the Evaluation Committee for the Punjab Human Organ Transplant Authority, ensuring ethical standards. Dr. Salim's commitment to advancing medical knowledge is as evident through his role as Associate Editor Proceedings, Journal of SZFPGMI. His research interests span a wide spectrum, including liver cirrhosis, malignant obstructive jaundice, viral hepatitis, liver transplantation, and reflux disease. Also reflects his dedication to addressing critical issues in the field. We have also a case today, which Dr. Amna from PARSA at first will be presenting, and it will be after Dr. Adnan's presentation. So I will hand over to Dr. Adnan. Thank you, Amna. बहुत शुक्रिया. I trust this will be bilingual, क्योंकि जो कई चीजें ऐसी हैं, I believe we have mostly हमारा audience Pakistan या South Asia का है, so I think they would be able to understand if I say something in Urdu. Is that okay? Definitely. ठीक है, बिल्कुल सही है. So we can now, एक second, I think we can now start. ठीक है जी, ठीक है. Professor Asad, I have your permission to begin. Ji, please, Adnan, go ahead. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for the kind introduction, Ms. Kiran. Acha. So I already have I would say the fortunate luck of standing on a very large mountain that has been erected by the series of lectures that had been presented by Professor Altaf, Professor Shahid Sarwar, Professor Zishan, and the likes on the subject of hepatitis B. So I've been left with a niche as to how to talk to patients. This will encompass some things that have been already said because, well, simply we can't help it because some things are so significant as regards the knowledge related to the disease, which you don't tell directly the patient about, but are significant as a whole in terms of his or her counseling. That they have to be mentioned. But of course, I will definitely be very brief and concise once touching upon those. So counseling of HBV patients, very different from other diseases, especially other diseases. I would say this is more in line with somebody with inflammatory bowel disease than it is with somebody who has hepatitis C or acid reflux, because again, we are looking at lifelong therapy. So how do we start? There's some common challenges in counseling. Healthcare providers, what do we need to do? We need to counsel patients about the disease, the risks that it represents, and the risks that it represents to all those around the patient.
family members, parents, siblings, children, partners, sexual contacts, household members, and couples family counseling requires additional training and enhanced counseling skills. Vertical transmission, mother to child, most common route for hepatitis B, but horizontal transmission, most important route of transmission in low endemic countries. HBV can survive outside the body for at least 7 days, और उन 7 days तक ये definitely infection कर सकता है. It's a very contagious disease. मरीज को ये बताना बहुत जरूरी है कि उनके body fluids, उनका थूक, उनका खून, किसी जख्म से निकला हुआ पानी या पीप किसी और को, घर के फर्द को इन्फेक्ट कर सकती है. तकरीबन 14 to 60% वो लोग, यानी कि 14 से 60% लोग जो कि ऐसे घर में शेयर करते हैं जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी लाहक है, उनके अंदर हमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का एविडेंस मिल जाता है थ्रू ब्लड टेस्ट. और 3 to 20%, यानी कि तकरीबन 1/4, they have an evidence of a chronic infection, which means that they have disease and it is showing signs of chronicity, long-term infection, which means it is an established infection. Highest risk are the sexual partners and children who are living with a person who has hepatitis B. Therefore, it is absolutely necessary that serological testing and vaccination has been done, and it has been recommended for over 4 decades now. How much is that followed? That is a very interesting and humbling fact, which we will be touching towards the end of the presentation. So everybody has to be tested in the house whenever somebody is diagnosed. And if somebody is not infected, they have to be vaccinated. There is no other way about it. If a patient has a spouse who hasn't completed their immunization series, she or he has to use barrier methods of contraception as long as they are sexually in contact and until they're vaccinated. And they shouldn't be sharing the basic things, like toothbrushes, razors. Open cut wound scratches have to be cut. And if any blood, any secretions is spilled, bleach has to be used to clean it. Food, utensils, physical contact, common बातें जो काउंसलिंग की होती हैं कि बच्चे को, स्पाउस को, बहन भाई को चूमने से, बर्तन शेयर करने से, उनको गले लगाने से, जफ्फी डालने से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट नहीं होता. Again, children have to be treated as well. अगर किसी का बच्चा इन्फेक्टेड है, फौरन उनका इलाज करवाएं. एंड अगर बच्चों के लिए कोई अरेंजमेंट है, कोई डे केयर सेंटर में जा रहा है, कोई मेड के पास है, जहां पर कोई बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में स्कूल में है, नर्सरी है, स्कूल है, मॉन्टेसरी है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन स्टैंडर्ड है, बट कोई स्पेशल उस बच्चे को आइसोलेशन की जरूरत नहीं है. Interesting facts here, 3 US programs were implemented on community-based services to improve testing and linkage and referral to care. Interesting facts were that 14% of household contacts of patients with hepatitis B had hepatitis B. 30% were showing evidence of resolved infection, so the antibody titers were positive, and 37% were HBsAg positive, which means they were either vaccinated naturally or they had undergone vaccination. Remaining 18% participants had negative tests. So that means a very low percentage of patients who were absolutely clear, less than a quarter, and they were susceptible and they had to be vaccinated. And then suddenly we come to Pakistan. Opioid epidemic. A number of patients with B and C are increasing because they're sharing needles. We see it every day. According to survey results, 1 out of every 10 university students in Pakistan uses drugs. And we had another study by the ANF. 1 out of every 10 means about 10%. ANF figures showed that approximately 8%, around 8% of students had been using drugs. So it's a very severe issue. And there is no program currently in place by any government, provincial or federal, to test campus-wide, to do a campus-wide screening for students and immunization. Stigmatization is an issue. I wouldn't say as much as certain other diseases like malignancies, like tuberculosis, but there is some perhaps in other countries as well, but in Pakistan, perhaps not that much, at least in my personal practice. In some patients have, but this was a foreign study, not a study in Pakistan, and they felt that they would be shunned by the community. So who are our target populations that we need to counsel? We need to counsel patients who have a
new onset acute hepatitis B. Excellent lecture on acute B by Professor Shahid Sarwar. I would recommend everybody to have a look at it. And ones by Professor Altaf and Professor Azishan as well. The whole series, in fact, and they're covering most of this. So, I'd be very brief. Patients with HBV with cirrhosis, without cirrhosis, and immunocompromised, or the other category, which I call soon to be immunocompromised, patients with rheumatological disease or malignancies who are about to undergo immunosuppressive therapy. This has already been touched by Professor Shahid in great detail. So, you need to, if somebody has acute hepatitis B, you're seeing them in the outpatient clinic, or you're seeing them, they're admitted to the hospital. They do stand some chance of, proceeding to acute liver failure. Many don't. And then you need to counsel them. You need to tell them that you need to be tested. You need to be followed up for a period of 3 to 6 months. And there is a high chance, 95% chance, that this will clear spontaneously. However, if any of these criteria are met that I'm pointing out with the cursor, then yes, there is a high degree of going to acute liver failure, and you would need more aggressive therapy, possibly a transplant. I think this study has, we're probably a top PARSA PSH has probably won a top fan medal for this particular study, because it has been referenced in possibly every lecture that we have been giving on the disease. So this is very important. And in terms of counseling, as if a viral load is over 1 million, more than a third of patients are going to end up with irreversible liver disease. And disease progression is not zero even with low viral loads. And this is a very significant figure, because this is usually the cutoff for many recommendations to start therapy, even with a normal ALT, mind you. So a major goal, a bigger picture. What is the bigger picture? Now, this is a counseling high. This thing that we need for ourselves, and then we need to concentrate this and communicate this to our patients. Why? We need to treat hepatitis B to prevent progression of disease. हमने लिवर को सुकड़ने से बचाना है. इस जो कि एक दफा ये हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं. हमने लिवर कैंसर को रोकना है. हमने लिवर जिगर के खराब सुकड़ने के अमल से जो मौत की कई वजूहात है, पेट के अंदर पानी पड़ना, उसकी इन्फेक्शन होना, खून की उल्टी आना, गनूदगी, बेहोशी, the whole lot. We have to tell the patients about this, that if you don't get treated, this is what is going to happen. And HCC is something that will develop even in a perfectly normal liver. We've seen young 23, 24-year-old gentlemen, ladies with hepatitis B, non-cirrhotic livers, and multifocal hepatocellular carcinomas. So without a cure, very important, we have no cure for hepatitis B. So long-term suppression, which means long-term therapy. So मरीजों को ये आपने clearly बताना है कि ये कोई 3 महीने 6 महीने का किस्सा नहीं है, सारी उम्र की दवाई है, at least कई साल तक चलने वाली है as per recommendations. So, but despite all of this, only 6.6 million of 2.2% of patients of chronic hepatitis B have received treatment in 2019. Reason क्या है? Restrictive clinical practice guidelines. Or again, these restrictive guidelines and the new trends in China and Saudi and WHO recommendations have been touched upon previously. So I'll just go through this very quickly because you need to counsel patients. You need to tell them कि आपका जिगर है, आपका जिगर खराब है, लेकिन हेपेटाइटिस बी सिर्फ जिगर के अंदर जो कैंसर पैदा करता है उसके 2 तरीके हैं. वो डायरेक्टली भी कैंसर करता है क्योंकि ये चीज हेपेटाइटिस सी में नजर नहीं आती, ना जिगर की चर्बी वाली बीमारी में नजर आती है, हालांकि तीनों काले यरकान की 3 मुख्तलिफ इकसाम है. I personally cause fatty liver as kala yarkan as well because long term it's the same thing. ये चीज बतानी जरूरी है. You have to tell the patients this, that with or without cirrhosis, you have a high risk of developing HCC. So HBV infects normal liver hepatocytes. During HB infection, chronic hepatitis can develop, leading to cirrhosis, HCC in some patients, and approximately 20% HCC develop in absence of cirrhosis. Directly, it causes HCC by integration into the host genome. Indirect, because the host immune system starts infecting the infected hepatocytes. So both processes cause more cell death, more cell generation, and in the end, more chances for any abnormal cell line to pass through the natural check mechanisms. The very interesting point, again, this will affect our counseling remarkably. It used to be thought that the higher the viral load, the more the risk for HCC for a patient. Nowadays, even moderate viral loads are considered the highest risks.
So you have a low risk for HCC in low and very high cases, but it's a parabolic association. So this is what we see. Higher risk over here. Again, this has been touched before. Bigger picture. Again, a moderate viral load is a high risk factor, and a fully infected liver can produce even higher levels, even if the infection is in the benign immunotolerant phase. And this would be expected to persist. Many patients have a very high viral load during initial infection. और क्योंकि हमने बता दिया parabolic है, so risk of HCC कम है. लेकिन persistent immune damage के साथ ये होगा कि immune related damage start होगा, risk for HCC बढ़ जाएगा, और viral load बेशक कम हो जाएगा उस immune tolerance की वजह, immunocompetent phase की वजह से, लेकिन with the resultant increased inflammatory activity, you will see an increased risk for HCC. These treatment guidelines, reality kya hai? What are we looking at because we need to give a patient a clear answer. They're largely not designed to demonstrate impact of treatments on long-term outcomes. So they may result in withholding of therapy in patients who may benefit. And the current guidelines do not represent the whole spectrum of hepatitis B patients. इसका मतलब है कई लोग ineligible हो जाते हैं हालांकि उनका रिस्क रहता है HCC होने का. And कुछ एनालिसिस हुई हैं, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि अपाजल जो एशियन सोसाइटी है, अमेरिकन AASLD और यूरोपियन ईजल, इन तीनों सोसाइटीज के अंदर कि बताया गया कि 64, 46, 34% पेशेंट्स रिस्पेक्टिवली इन ऑल थ्री जो कि आउटसाइड गाइडलाइंस थे उनके अंदर HCC पैदा हो गया. 75% of patients who were untreated who developed HCC were outside AASLD guidelines. तो immune tolerant phase क्या होगा? हम तो patient को छोड़ रहे होंगे, लेकिन क्या है? Significant injury और fibrosis हो सकती है. और what does that mean? Again, HCC and adverse liver outcomes. तो risk क्या है? Age 40 ज्यादा है, immune tolerant phase इतना benign नहीं है जितना समझा जाता है. और again वही reveal वाली study के 36% patients develop कर जाएंगे cirrhosis if the count is over 1 million. Evidence ये suggest करता है कि इन patients को untreated लोगों को भी liver cancer का risk ज्यादा है. And disease progression is not zero if viral load is less than 2000 with a normal ALT. So इसलिए कोई patient अगर argue कर रहा है कि जी मुझे तो ये कहा गया, I saw this physician, they said that you don't need to undergo treatment. This is something that needs to be revised. And this is being revised across some very big groups like China and Saudi Arabia and WHO recommendations. And I think it's not far the PSH PARSA ECHO team would be making nationwide recommendations for this as well. Because our patient population is very similar to those countries who are affecting these changes. So gray zone patients, HBV, DNA 2000 से ज़्यादा, ALT हल्का सा बढ़ा हुआ है. HCC का इंसिडेंस इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर 0.3 per 100 patient years, और इसमें कहा गया पेशेंट्स जो ineligible for treatment है remain at risk for HCC. So आपने इलाज तो करना है, क्या करना है आगे? We'll get to that. So nucleoside analogs जो हमारे पास हैं basis of treatment freely available, सस्ते भी हैं अगर किसी ने पैसे देके भी खरीदना है. They reduce risk by जो mechanisms पहले कई हमारी presentations में discuss हो चुके हैं, and then resultantly they reduce carcinogenesis. There was a randomized double-blind placebo-controlled study. उसमें देखा गया था कि जिन patients का DNA mildly 2000 से ऊपर है, ALT no cirrhosis, E antigen negative है, placebo group के अंदर higher progression थी fibrosis stage compared with the tenofovir disoproxil. Chinese study ने किया कि expanded treatment strategy ये थी कि again discuss हो चुकी है ये बात पहले कुछ presentations में. HBsAg positive patients 18 plus treatment coverage 80% सबसे ज्यादा cost effective है. और इसमें कहा गया कि by 2050 82% B related complications mainly cirrhosis and HCC prevent हो सकती हैं. Over 60% coverage WHO recommend कर रही है, और वो कह रहे हैं by 2030 65% reduction हो सकती है, which means only in 6 years. तो हमें ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड लोअर करना पड़ेगा, मरीजों को समझाना पड़ेगा कि वायरस बेशक कम है लेकिन नुकसान पहुंचा सकता है. सो आई थिंक वी आर मूविंग मोर इनटू द HCV कैंप कि जब हेपेटाइटिस सी का PCR पॉजिटिव है, चाहे 200 है, 2 लाख है,
हम ट्रीट कर रहे होते थे। चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी गाइडलाइंस रिवाइज कर दी और वो कहते हैं हर एक को ट्रीट करो, जो भी HBsAg पॉजिटिव है विद डिटेक्टेबल DNA, इवन 10 to 20। कोरियन स्टडीज ने कहा है कि करंट गाइडलाइंस को उन्होंने कंपेयर किया विद एक्सटेंडेड इंडिकेशन, उन्होंने कहा HCC का रिस्क बढ़ जाता है अगर अंडर नेशनल अगर हम पुरानी वाली गाइडलाइंस को फॉलो करें। सऊदीज ने देखा, दे आल्सो फील के कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म है दैट इज फार लोअर इफ यू हैव एन एक्सपैंडेड ट्रीटमेंट पॉलिसी। अगेन WHO टारगेट क्या है, 90% इन्फेक्शंस को आप डायग्नोज करें एंड ट्रीट 80%, और 30 to 35% रिडक्शन हो जाएगी बाय, और अब 50 to 55 बाय 2030। व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट ट्रीट? मरीज को ये बात बतानी बड़ी जरूरी है। क्या जो अब हम करने लगे वो सारी लेकिन सोबरिंग फिगर्स हैं बड़े। हमने भी स्टडी, वी जस्ट कंप्लीटेड दिस, इज जस्ट बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन लास्ट वीक इन अ लोकल जर्नल। हमने सिर्फ लिवर सिरोसिस के पेशेंट से बड़ा बेसिक क्वेश्चंस किए जस्ट टू सी द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडीज डन इन पाकिस्तान टू डेट। वेरी हम्बलिंग फिगर्स। ओनली 65% पेशेंट्स में बड़े वेग सिम्टम्स थे सिरोसिस का पता चलने से पहले, उनको पता ही नहीं था, व्हिच इज रिफ्लेक्ट्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। एक क्वार्टर को सिर्फ पिछले एक साल में पता चला था। तकरीबन nearly half of the patients had no history of antiviral therapy. 54% had comorbidities. Again, पाकिस्तान में तो bad lifestyles का वही साइकिल शुरू हुआ जो 60s, 70s, 80s में वेस्ट में था. So we're going towards metabolic syndrome very rapidly. In fact, Pakistan is the fastest, one of the fastest in the world. So, you have these. So you have two diseases in one. In over a third. Only 2% of these adults, male and females, had received an HPV vaccine. These are very sobering figures because we have implemented vaccination in children. But as far as programs for adult counseling and vaccination is concerned, we're far behind. So this is something that needs to be taken up. 92% were reliant on family members for basic home activities, going to the toilet, taking a shower. 60% were coming up to twice a month in the outpatient clinic. Complications, cirrhosis, PSC, GI bleeds, encephalopathy, SBP, and so they aren't complete. Because 98% had been admitted to hospital with complications of cirrhosis since studies करना जब स्टडी हमने पब्लिकेशन के लिए लास्ट ईयर भेजी थी. सो ये रेट्स डॉलर जब डी की वैल्यू बढ़ी है 200 से तकरीबन 300 के करीब चला गया है पर रुपीस पर डॉलर, तो आप उसके हिसाब से रिवाइज किया जा सकता है. और दीज आर लास्ट ईयर्स कन्वर्जन रेट फिगर्स. और आप देख लें कि मंथली इनकम से भी तकरीबन डबल से भी बल्कि 4 से 5 गुना ज्यादा खर्चा हो रहा है पर एडमिशन. 80% were financially dependent on their families. 1/4 had to liquidate personal property, घर बेचना, कारोबार बेचना और प्रॉपर्टी जमीनें बेचना to support basic therapy for complications of cirrhosis. Over 3/4 had to borrow money, कर्जा लेना पड़ा. और 1/4 was the working class, so financially vulnerable social segment. So very humbling figures. अगर आप ट्रीट नहीं करते, छोड़ देते हैं, और हमारे केस में कि पता ही नहीं चलता बिकॉज बी की ना स्क्रीनिंग है ना उसकी ट्रीटमेंट, उसके लिए वैक्सीनेशन को आम किया गया है. 2% हमने फिगर देखा है. आई थिंक ऑल द पीपल लिसनिंग कैन डू अ सिंपल स्टडी इन देयर GI OPDs or medical OPDs even, just start asking people who have had an HBV vaccine. The figures won't be far from this. और हमारे per capita इतना कम है, and then over a quarter are below the poverty line, and half the people were transplant candidates, but only 2% could afford it, and only 0.4% had employer supported treatment. Again, the health card helps to some extent, but not to a great, especially now that the coverage has been revised. So मरीज को क्या कहना है उर्दू में? I think ये निचोड़ है सारा. हेपेटाइट ये जरूरी नहीं लाजमी, ये मैंने पढ़ा था परसों में रोड पे देखा तो ट्रैफिक पुलिस ने लिखा हुआ था कि ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी नहीं लाजमी है. तो हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीके जरूरी नहीं लाजमी है. हेपेटाइटिस बी का इलाज तमाम उम्र जारी रहता है. हेपेटाइटिस बी होने की सूरत में घर के तमाम अफराद का टेस्ट करवाना जरूरी नहीं लाजमी है.
और इलाज के बगैर हेपेटाइटिस बी बज़ाहिर सेहतमंद जिगर में भी कैंसर पैदा कर सकता है। मैंने सोचा सरतान लिखूं, लेकिन मैंने कैंसर लिख दिया। आई थिंक ये वर्ड जरा ज्यादा उर्दू टर्मिनोलॉजी से ज्यादा परकुलेट कर चुका है हमारी साइकी के अंदर। So with that, I conclude by saying we need to test, we need to treat, so that we can prevent. And I think that's the message that I would like to give to conclude. Thank you. Thank you very much, Adnan, for this presentation. और मैं बाकी थोड़ा सा अपडेट कर दूं और सारे ऑडियंस को, तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, शायद 2 या 3 हफ्ते हुए हैं, ये हेपेटाइटिस बी हमने आपको जो पढ़ाया है उसकी WHO की गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं। और काफी कुछ तो पुराना ही है, लेकिन आई वुड लाइक कि हम एक सेशन शेड्यूल करें, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस हैं वो मोस्टली आप लोगों के लिए, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों में, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में, जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेशन है, तो उसमें वो काफी यूजफुल है। तो हम उसको डिस्कस तो कर चुके हैं, बट आई वुड लाइक कि हम एक सेशन, मे बी के नेक्स्ट सेशन में 5 मिनट में उसको भी अपडेट कर दें। तो आई वुड लाइक माय टीम टू नोट इट डाउन। और अदनान, आपकी जो स्टडी है उसमें अभी मैं देख रहा था, जो शेख जायद में आपने की है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं और अलार्मिंग भी Yes, हैं। alarming. तो आई एम Very श्योर, alarming. और बाय द वे ये लाहौर है, Lahore. ये लाहौर है। तो ये आई डोंट नो अगर पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, क्योंकि हम बहुत बड़े चैलेंज को फेस सर कर मैं रहे हैं। सर मैं सबसे पहले अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक और हम्बलिंग सोबरिंग फिगर मैं बताता हूं। हमने कुछ अर्सा पहले, दैट टू वाज पाकिस्तान्स बिगेस्ट स्टडी, मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पे हमने काम किया। और अब लग रहा था कि ये वही कुछ हो रहा है जो कि इधर हो रहा था इस हेपेटाइटिस सी के साथ, बी और सी के साथ। हमने ये देखा कि हमने उन पेशेंट्स को देखा जो कि पिछले 5 साल में शेख जायद आए थे विद पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। हमले की बात ये थी कि सिर्फ 13% पेशेंट्स का रिसेक्टेबल डिजीज था टाइम ऑफ डायग्नोसिस। एवरेज टाइम 3 महीने था जो वो अपने जीपीज और लोकल क्वैक्स और लोकल इवन मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास फिरते रहे हैं, और 3 महीने के बाद दे वर बीइंग रेफर्ड। और कंसिडरिंग के ओवर 70% of these people, 60 to 70% of these people belong to Lahore and the peripheries of Lahore. कुछ थे गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, साहिवाल, सियालकोट, ऐसे थोड़ा बहुत, बट वी weren't, बहुत रेयर थे जो साउथ पंजाब से आ रहे थे। लेकिन जस्ट इमेजिन के ये प्राइमरी लेवल पे स्क्रीनिंग का और रेफरल का इतना प्रॉब्लम है कि सिरोसिस टाइम पे डिटेक्ट ही नहीं हो रही, और बी की वैक्सीनेशन तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। 450 लोगों में तो 2% लोगों में थी। तो मैं क्लिनिक पे भी यही देखता हूँ, लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। आई आस्क एवरीबडी, है नहीं, नोबडी इज वैक्सीनेटेड। वो लोग थोड़े बहुत वैक्सीनेटेड नजर आते हैं। आई विल बी वेरी क्लियर, जिनको हेपेटाइटिस सी 15-20 साल पहले हुआ था, उन्होंने इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगवाए थे। उस टाइम पाकिस्तान में एक स्पाइक आया हुआ था उस जनरेशन में एंजरेक्स बी लगवाने का। उसके बाद इट जस्ट डाइड डाउन, because I don't see Hep B vaccination in nearly any patient who has come to me with a relapse with after oral antivirals, because again the trend for giving Engerex B was in the early mid 90s, late 90s, and then it died down. Or because of the fact that the government is buying hepatitis B vaccines en bloc to give to patients through the hepatitis clinics. उसका अब नतीजा ये निकला है कि हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में भी कई दफा नहीं मिल रहा होता, बाजार में मिलता ही नहीं है एंजेरेक्स भी। मेजर सिटीज के अंदर इट रूटीनली हैपेंस कि मैं पेशेंट्स को लिख के देता हूं, दे कांट फाइंड इट इन द मार्केट। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि एक सर्वे हुआ था 2 साल पहले जिलियट की कोलैबोरेशन से, और उसमें एंड दैट वाज एन ऑनलाइन सर्वे, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने उस सर्वे में हिस्सा लिया था वो एजुकेटेड थे, आई मीन मैट्रिक और ग्रेजुएट लेवल के लोग थे। और उन लोगों में पाकिस्तान में 500 लोगों ने वो सर्वे अंडरटेक किया था, और ये बड़े शहरों में हुआ था, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। और उनमें 50% लोगों को ये नहीं पता था कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है।
और वैक्सीन का वैसे कभी इशू आया नहीं है। दवाइयों का इशू डेफिनेटली आया है हमें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में, लेकिन एज सच वैक्सीन का इशू नहीं आया। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो अवेयरनेस है वो बहुत लैकिंग है। एनी हाउ मैं ज्यादा नहीं एक शकीला बानो, प्लीज आपने रेज हैंड है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन आप अनम्यूट करें और यू कैन ज्वाइन। हेलो सर। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उधर तक का तो पार्ट हम अपना प्ले कर देते हैं। मैं एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट ही काम कर रही हूँ, तो हमारे पास हेपेटाइटिस के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। लेकिन मेरा उनसे एक क्वेश्चन ये भी है कि पेशेंट का मेन कंसर्न होता है कि उनको फ्री में कहाँ से इलाज वो करा सकते हैं। तो हम लाहौर में मोस्टली जो है वो PKLI प्रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता। तो उसके अलावा जो टर्शरी केयर है वहाँ कभी अवेलेबिलिटी होती है, कभी नहीं होती, तो फिर पेशेंट जो है वो उसको उस तरह से फॉलो ही नहीं कर पाते, और वो फिर बीच में उस चीज़ को छोड़ के, और फिर जाहिर सी बात है बहुत ही सिवियरिटी के साथ भी वापस आते हैं अक्सर। क्योंकि वो अगर हमारे पास मोस्टली अगर डायबिटीज के या किसी और वजह से या हाइपरटेंशन के वजह से आ रहे होते हैं, तो वो अपनी बाकी प्रोफाइल भी साथ लेके आ रहे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे लाहौर में ही इवन किन सेंटर्स पे या किन हॉस्पिटल्स में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब स्क्रीनिंग हो रही है या इलाज होता रहता है, जहाँ हम उनको रेफर भी करें प्रॉपरली। मुझे जिन जी हॉस्पिटल्स का पता है, अक्सर पेशेंट्स वहां से आके कहते हैं कि वहाँ पे नहीं जी। हो रहा, नहीं मिल रहा। मैं आपको क्विकली आंसर करूंगा, फिर अदनान भी इस पे अपनी राय देते हैं। आई एम बेसिकली वर्किंग इन गुजरांवाला, और जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें अभी तक मैं 3 सालों से काम कर रहा हूं। अभी तक हमें हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और इवन ट्रीटमेंट में एक एंटाकाविर दवाई है और एक टेनोफाविर डाइपॉक्सिल फ्यूमेरेट दवाई है। इसका हमें अभी तक शॉर्टेज नहीं आई। गो के हमें जो हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन है उसमें शॉर्टेजेस आई हैं। आपको चेक करना पड़ेगा लाहौर में कि कौन से सेंटर्स हैं जो पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। बट आई कैन डू इज कि अगर कोई लिस्ट है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उजैर, जी इफ यू सर। कैन नोट इट डाउन, तो वो जी सर, वो यही मैं पूरे चाह रही थी। पंजाब की एक लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं सो दैट यू कैन फाइंड इट इजियर टू रेफर। अदनान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर, ऑब्जर्वेशंस तो ठीक हैं। वाकई कभी आती है दवाई, कभी नहीं आती। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जो क्लिनिक्स हैं वो तो पूरे पंजाब के हर सरकारी हॉस्पिटल में हैं। तो मैडम PKLI के अलावा जिना सर्विसेज, मेयो, शेख जायद वगैरह हर जगह रेफर कर सकती हैं, बल्कि शेख जायद में अब कम आती हैं, बाकियों पे फिर भी जरा ज्यादा सप्लाई है। एक चीज मरीजों को ये जरूर समझाएं कि इसका इलाज है बड़ा सस्ता। अगर आपने बताया आपके पास कोमॉर्बिडिटीज के मरीज आते हैं जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, गंठिया वगैरह है, उसकी अद्वियात वो ले रहे हैं। हेपेटाइटिस बी की जो दवाई आती है पर मंथ, जेनेरिक्स इतनी अवेलेबल हैं, कई जेनेरिक्स की कीमत पर मंथ दवाई की किसी भी ब्लड प्रेशर या शुगर इन सब इलाज से कम ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे से कहीं वो खरीदे। जाहिर बात है जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, 1,000 रुपया, 500 रुपया अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है उसमें बढ़ा देना, कहना आसान है, करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है कुछ बेचारे लोगों के लिए। तो शायद इस तरह काउंसलिंग बेहतर हो जाएगी कि अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है। आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि महीने की बजाय जरा ज्यादा क्वांटिटी की दवाई दे दिया करे लोगों को, ताकि उनको ट्रैवल जो पेरिफेरी से करते हैं यहाँ पर आके लेते हैं अपने करीबी DHQ से, क्योंकि DHQ सब में तकरीबन हेपेटाइटिस क्लिनिक्स हैं, ओकाड़ा वगैरह ऐसी जगहों पे भी। तो उनको ट्रैवलिंग कम करनी पड़े, क्योंकि मेरे ख्याल में एक सिंगल ट्रैवल पे जितना उनकी कॉस्ट आ जाएगी, आके सुबह आके दवाई लेके दोपहर को वापस जाने की, वो एक महीने की दवाई का वैसे ही उतने की आ जाती है। अगर हम जेनेरिक्स देखें, एंटिकाविर स्पेशली देख लें और टेनोफोविर, डिसोप्रॉक्सिल देख लें, तो वो इतने की आ जाती है। तो एक तो ये काउंसिल करें कि बहुत सस्ती दवाई है। दूसरा ये कि जितनी मिलती है मिले, सॉल्ट चेंज ना करें अपना, जो API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है
कंपनी बेशक चेंज हो जाए, आप कोशिश करें जिस महीने नहीं मिली उस महीने खरीद लें, जितनी ज्यादा मिलती है ले। और आई थिंक जो हमारी रिकमेंडेशंस और जो आई बिलीव नेशनल गाइडलाइंस बननी चाहिए, जो पारसा है और पीएसएच के अंडर होनी चाहिए, नेशनल रिकमेंडेशंस वो यही होनी चाहिए कि ज्यादा दवाई की क्वांटिटी दें ताकि लोगों को बार बार आना ना पड़े। और अलॉन्ग विद अदर रिकमेंडेशंस जो कि अब आ रही हैं सामने के, ट्रीट एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ वायरल लोड फॉर लाइफ। सादिया सुहेल नूरानी, आप काइंडली अनम्यूट करें, रेज्ड हैंड है, आप सवाल। जी वी कांट हियर यू। आपका माइक का इशू ना हो, क्योंकि आप अनम्यूटेड तो हैं, लेकिन वी कैन नॉट हियर यू। इन्होंने चैट में भी क्वेश्चन आई थिंक कोई लिखा है शायद, या कोई मैं कमेंट। जवाब दे रहा हूँ, चैट के जवाब में दे रहा जी हूँ जी साथ साथ। जी 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 अदनान। क्वेश्चन है कि इवन व्हेन एवरी फीमेल इज चेक्ड एट एंटीनेटल बट दे आर नेवर एडवाइज्ड वैक्सीनेशन। हाँ, ये तो एक दिस इज एन ऑब्जर्वेशन नॉट अ क्वेश्चन। तो एक और था, प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, वो कह दिया सेफ है, और अगर वैक्सीनेट माँ हो भी गई है तो बच्चे को फिर भी वैक्सीनेट कराना है एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। जी एनी क्वेश्चंस अदर? दो थे, और कोई क्वेश्चन नहीं था, दो थे, दे बोथ बीन आंसर्ड। One more question, I think one has come up. Hep B Hepatitis B treated person can person. get married? Question marks, because there is a case, one boy mother came to girls house के डॉक्टर साहब कुछ नहीं होगा, आप रिश्ता कर दें। जी अदनान, इसका आप कैसे आंसर करेंगे? इसका आंसर ये है कि ये दो क्वेश्चन आ गए, इसके नीचे भी आ चुका है। अच्छा, पहले इसको आंसर करते हैं। यस, शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 शादियां कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, शादियां बिल्कुल हो सकती हैं। और उसका रीजन, और लेकिन उसके लिए असूल क्या है, जो मैंने काउंसलिंग की हमारी जो स्लाइड्स थी अगर आप वो देखें, उसमें ये कहा गया स्पाउस के लिए जब तक अगर तो स्पाउस वैक्सीनेटेड है तो फिर तो आपने सबसे पहले उनका कराना है एंटी एचबीएस एंटीबॉडी टाइटर। ये एक बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड टेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, कि किसको बूस्टर लगना है किसको नहीं लगना, को 3 साल के टीके लगा के भी इम्यूनिटी है कि नहीं। बिकॉज आई रिमेंबर अ फैमिली फ्रॉम बलोचिस्तान, वन ऑफ द ऑल सिबलिंग्स हैड बीन वैक्सीनेटेड एंड वन ऑफ द सिबलिंग्स स्टिल टर्न आउट टू बी हैप्पी पॉजिटिव। मुझे पता नहीं, उसको पैदाइशी होगा बेचारे को, शायद उसने बाद में लगवा ली होगी। हैविंग सेड दैट, बूस्टर की बात जरूरी है। तो अगर किसी को वैक्सीनेट, किसी ने फॉर एग्जाम्पल अब इस तरह शादी होने वाली है कि रिश्ता लेने के लिए आए हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहली डोज, चाहे लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, पहली डोज दोनों लगवा लें। या अगर एक ने नहीं लगवाई हुई और एक ने लगवाई हुई, तो जिसने नहीं लगवाई वो लगवा ले। और नहीं भी लगवाई हुई, दे कैन गो अहेड विद मैरिज, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज हो जब तक वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कि 1 महीना, 1 डोज महीने बाद और 6 महीने बाद तीसरी है। कुछ लोग क्विक डोज भी कहते हैं कि हर महीने आप लगवा लें, अगर कोई चाहते हैं कि गर्मियों में शादी ना करनी पड़े, सर्दियों में ही करनी है, तो फिर वो उस लिहाज से कर ले। बट वैक्सीनेशन करें, जब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हो जाती बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, उसके साथ इट इज टोटली सेफ। और अच्छा, अगला सवाल है, इफ सीरो नेगेटिव मदर हैज अ कॉन्टैक्ट हु हैज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, कैन मदर? हाँ, मदर का वही ना, शी कैन ऑफ कोर्स। ये वही पहले वाला सवाल आई थिंक, प्रेग्नेंट, मैं तो ये समझूंगा कि ये प्रेग्नेंट मदर की बात कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लग सकती है कि नहीं। अच्छा, अब इन्होंने ये क्वेश्चन बड़ा ब्रॉड सा लिख दिया है कि सीरो नेगेटिव पर्सन हैव कांटेक्ट विद, वो विद अ पर्सन, कांटेक्ट विद अ पर्सन, वो कौन है? क्या वो पर्सन उनका, उस प्रेग्नेंट मदर का डेंटिस्ट है, या वो जो कि दांत में उनको इन्फेक्ट कर रहा है गंदे इंस्ट्रूमेंट से, या उनकी ब्यूटी पार्लर वाली है, या उनके हस्बैंड है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और जिनको हेपेटाइटिस बी है। तो उसके अंदर जवाब ये होगा कि अगर सीरो नेगेटिव मदर है तो सबसे पहले वो मदर, ये दिस इज टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक अ केस ऑफ कि पिन प्रिक के नीडल प्रिक हो गया। तो सबसे पहले तो ये, अगर आप कह रही हैं सीरो नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो चेक करवाएं कि वाकई सीरो नेगेटिव है कि नहीं। और जो बंदा जिससे इन्फेक्ट हुआ है, क्या उस बंदे का वायरल लोड पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो सीरो पॉजिटिव है,
क्या पता वो दवाई खा रहा हो और उसका वायरल लोड 0 हो, फिर तो कोई मसला नहीं है। और फिर बात आ जाती है उसकी कि ऐसा पेशेंट से जब भी उनका कांटेक्ट होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उनको लगवाने पड़ेंगे और उनको वो है अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये इसको तो ऐसे लिया जाएगा। और in this hospital we screen every patient coming in family medicine clinic for hep C via kit treatment। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, ये this isn't regarding a pregnancy or to conceive in future, yes, safe। Contact person has acute viral hepatitis, B। acute viral hepatitis B में वायरल लोड ज्यादा होता है, तो वो उसको ऐसे ही लिया जाएगा कि B का नीडल प्रिक हो गया। I'm supposing कि ये आपने जो लिखा है acute viral hepatitis, ये उस पेशेंट को acute hepatitis B है। मैं आपको ना रिकमेंड करूंगा ये जो पिछली जो शायद सर्वर वाली टॉक है, और इसमें आप जरा जरूर इसको देखें, yes। क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चंस का एल्गोरिथमिकली आंसर है। आई मीन शायद साहब ने बड़ा अच्छा टेबल बनाया हुआ है उसका। बहुत अच्छा टेबल है। और वो यूट्यूब पे एको पारसा के चैनल पे जाएं, शायद साहब की वीडियो देखें जी, उसमें ना ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है, जो भी बात हो रही है कंसेप्शन की, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो माँ के वायरल लोड पे डिपेंड करते हुए उसका जो ट्रीटमेंट है टेनोफोबिड एपोवॉक्सिल फ्यूमेरेट के साथ 3rd ट्राइमेस्टर से और प्रेगनेंसी के बाद तक, और बच्चे की एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, वेदर और नॉट माँ का इलाज उसके बाद जारी रहेगा, ये उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर बेस करेगा कि आप वर्टिकल ट्रांसमिशन कम करने के लिए दे रहे हैं कि एक्चुअली यू आर प्लानिंग ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये डॉक्टर अल्ताफ साहब ने भी बड़ा अच्छा डिस्कस किया था, और ये उसके अंदर भी है। और बाकी जो जब एक्सपोजर की बात करते हैं, जिस तरह अदनान ने कहा है, वो अगर वायरल लोड ज्यादा है, जिस तरह एक्यूट सेटिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी पे है, आप एक्यूट बी की बात कर रहे हैं, फिर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों आती हैं। ये आपकी हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी है, जबकि फिंगर प्रिक जिस तरह हम लोग डील करते हैं, तो इसको आपको और याद रखें कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है इस वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें अभी भी जोर देना है, हम सारे लोग चूंकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हम सब लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए। और वक्तन फवक्तन कोई 2-4 साल बाद एक दफा आपने अपना टाइटर चेक करवा लिया, और उसके बाद वो टाइटर आपको 2-4 सालों बाद एक दफा चेक करा लेना चाहिए, जो कि HBS एंटीबॉडी है जिसकी जिसकी बात हो रही है। तो ये इस तरह से है। और स्पाउस की बात बड़ी क्लियर है, ये जो आप बात करते हैं जी मंगनी और रिश्ता होने वाला है, एक पार्टनर को अगर है तो दूसरे को, और ये डिफिकल्ट चीज है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर मैं तो यही कहता हूँ कि जी आप अभी शादी से पहले वैक्सीन का कोर्स पूरा कराएं, और उसके आखिरी टीका लगने के 6 हफ्ते बाद HBS एंटीबॉडी चेक करा लें। और इस दौरान अगर शादी हो गई है तो फिर आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करनी है टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड चेकिंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी के वो एक जो दूसरा पार्टनर है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनी एनी अदर क्वेश्चन जो है स्क्रीनिंग, एक और ये इंडस हॉस्पिटल से रिलेटेड ये स्क्रीनिंग का एक क्वेश्चन है। ये जितनी भी स्क्रीनिंग जो हमारी हो रही है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, इवन जो वेलफेयर क्लिनिक्स हैं, वो सारी किट मेथड पे हो रही है, ICT मेथड पे हो रही है। अनफॉर्चुनेटली होना तो एलाइजा पे चाहिए, लेकिन वो फिर कॉस्ट के इतनी पब्लिक को आपने कवर करना होता है तो वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव रहता नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत ज्यादा है तो आप उसको एलाइजा से जरूर चेक करें। और आइडियली आइडियली अगर आप बात करें तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी टोटल और HBS इकट्ठा होना चाहिए, जो कि फिर आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये पर्सन कंप्लीटली नेगेटिव है, अगर इसको वैक्सीन से प्रोटेक्टेड है या पिछली इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड है।
तो ये आपको ये तीनों चीजों के आंसर मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास वो हो, रिसोर्सेज हो प्राइवेटली अक्सर पेशेंट पे, तो हम तीनों चीजें आंसर करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? वी स्टिल हैव अबाउट 10 मिनट्स टू गो। तो एक केस था, लेकिन आई थिंक विल फोरगो द केस फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम इसी डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे। सर, एनी प्लान फॉर गाइडलाइंस? अब हम हेप बी की कोई नेशनल रिकमेंडेशंस पे काम करें? जी अदनान जी, हम उसमें हैं, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया, जो WHO की गाइडलाइंस आने के बाद आई थिंक देयर इज अ नीड टू एटलीस्ट टू ब्रिंग आउट अ पेपर जो थोड़ा सा उस डिफरेंस को हाईलाइट करे, कि जो जो बड़े सटल से चेंजेस हैं बट दे आर इम्पोर्टेंट। और आई एम हैप्पी कि थोड़ी चीजें उन्होंने इजी कर दी हैं फॉर प्रैक्टिशनर्स, और उन्होंने थोड़ी सी रिसोर्स लिमिटेशन को भी कंसिडर किया है। तो और द ट्रेंड इज मोर टुवर्ड्स स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट रादर देन वेटिंग एंड वॉचिंग। So So I you think suggest a review paper reviewing recent guidelines and I think recommendations such as those coming from the WHO, China in case, and Saudi Arabia? yes, I think हमारे फिर लोकल सिनारियो में वी विल हैव अ रिकमेंडेशन। गाइडेंस होगी, गाइडलाइंस तो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, तो मे बी किधर। सो ठीक है, ठीक है। Recommendations. any I any think other? this should be formally initiated. Any other question? Nope. I think the chat is clean. Thank you. Kiran, over to you. Sure. Thank you very much, Dr. Adnan. Next week's session will be on HBV pregnancy, breastfeeding, HBV in children by Professor Kashif Malik. और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर असद, हम WHO की जो नई गाइडलाइंस हैं वो भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वी डू इनकरेज केसेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, और अगर आपके पास कोई केस है आप खुद प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमसे केस फॉर्मेट क्या की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन प्रेजेंट द केस फॉर यू। We are grateful and thankful to team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Thank you. Thank you very much. For sure, ma'am. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.